Hello everyone. So our question is two particles A and B are moving on two concentric circles of radii r1 and r2 with equal angular speed of omega. At t is equals to 0, their position and direction of motion are shown in the figure. The relative velocity Va minus Vb at t is equals to pi upon 2 omega is given by, our options are omega into r1 plus r2 I cap minus omega r1 plus r2 I cap, omega r2 minus r1 I cap, and omega r1 minus r2 I cap. Okay, now from the figure we can easily verify that the particle A is going upwards and particle B is going vertically downwards. Okay, and their angular speed is equal given to us in the question. So omega A is given to us is equal to omega B equals to omega. Now we have to find the relative velocity of particle A with respect to particle B. Correct. After time t is equals to 2 pi upon 2 omega. Okay, now velocity is given as r omega. So if we calculate the position of particle A or particle B at time t is equals to pi upon 2 omega, so we can calculate the relative velocity. Okay, now the angular position of the particle theta is given as omega t. Correct. So what we can say, at time is equals to pi upon 2 omega, the angular position will be given as omega into pi upon 2 omega. So theta will be equals to pi by 2. So what we can say, that the particle A will travel a distance of pi by 2. So its velocity is vertically upward, so it will travel a distance of pi by 2 and it will come over here, and its velocity will be in this direction, in the minus I cap. Correct. Now since the angular speed of particle A and B is same, so particle B will travel this distance and come to this position. Correct. So the final position of A and B are this, and the velocity will be in the same direction as of A, in the minus I cap. Correct. Now from here what we can say is Va vector minus velocity of B, the relative velocity will be given as r omega. Correct. So the distance of A is r1 into omega, and it is in minus I cap minus of r2 omega into minus I cap. Correct. So from here, taking omega as common, so what we get is r2 minus r1 into I cap. Correct. So Va minus Vb comes out to be Va minus Vb comes out to be omega into r2 minus r1 I cap. Okay. Now checking from the options, we get option number 3, that is omega r2 minus r1 I cap is the correct option for us. Okay, so option 3 is the correct option. Thank you. Hello everyone, let's start the question. Question says that a particle is moving along a circular path with a constant speed 10 meter per second. What is the magnitude of change in velocity of particle when it moves through an angle 60 degree around the center of the circle? Okay, so in the question it is asking to find out the change in magnitude of the velocity of particle. So let's see, this is a circle along with the particle is moving, and initially the particle was here having the velocity v1, and now it is somewhere here having the velocity v2. Okay, if this is the center, then angle between these 2 points is 60 degree. So this is given in the question. Okay, now the question is asking the change in velocity, okay, magnitude of change in velocity between these 2 point. Okay, so if we draw a vector diagram, okay, so let's say the v1 is in this direction and the v2
is indeed this direction, okay, then we need to first find out this theta. Okay, so if we see, so if we shift this vector towards here, let's say we shifted this vector v1 towards here, okay, this is not straight, so let make a straight arrow. So this is v1, let's say. So we have to find out this theta, okay, and if we extend this length, then this will be like this, okay. So we know that this is 60 degree, okay, and suppose this is 90 degree, this is 60, then this must be 30 degree, okay, and again these two are at 90 degree, then this must be 60 degree, okay. So we came to know that the angle between the velocity 1 and velocity 2 is 60 degree, so theta is 60 degree, okay. Now we have to find out the magnitude of change in velocity, that is del v, mod del v, okay, which is mod v2 minus v1, okay. Now if we see here, the v1 is in minus, okay, so what we can do, let's draw negative to v1. So negative to v1 will be the just opposite of the v1, so we can draw the v1 in this direction, okay. Then we have to find out the resultant, that is v2 minus v1. This is minus v1 and this is v1, okay. So if we apply the parallelogram, rule of parallelogram, okay, of two vectors, then this will be del v is equal to root under v1 square plus v2 square plus 2 v1 v2 cos, and this is, suppose this is, so here it will be, this is pi, so this angle will be pi minus theta, okay. So we can write pi minus theta. So here we know that the velocity is constant, so v1 equal to v2. So if we write v1 equal to v2, that is v, then this term will be 2v, okay, because v1 and v2 are same, and also this one will be 2v square, and here 2v square, it will be 2v square, and here 2v square, and cos pi minus theta, that is we can write pi minus theta, we can write this one 2 root v square into, and this one will be root under 1 minus cos theta is 2 sine square theta by 2, okay. So again this root 2 will be out, so we can write root 2 into v square, and this root 2 will be root 2 and sine theta by 2. So root 2 into root 2, it will be 2, and the v is 10, so 10 square, and sine theta, okay. So theta is equal to 60 degree, so theta by 2 will be 30 degree, so we can write sine 30 degree. Now if we substitute the values, this is root v square, so we can write here root 10 square, okay. So this will be 2 into, when we remove the root, it will be 10,
and sin theta is 1/2. So here 2 and 2 both are cancelled out. So what we left, the difference between the velocity will be 10 meter per second. Okay, so we can write the del v is 10 meter per second. Thank you. यहाँ पर बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक स्मॉल ब्लॉक को क्या है शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक ब्लॉक है, ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, सब में रखा है और वो सेम वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। शॉर्ट किया गया है उनको इन चारों लूपों में, चारों ट्रैक पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेम वेलोसिटी से सबकी वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से वो एंटर कर रहे हैं इस लूप के अंदर। ठीक है, सो इसमें पूछ रहा है द स्पीड विद द ब्लॉक एंटर ट्रैक इज सेम इन ऑल केसेस। ठीक है, पूछ रहा है द हाईएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हाईएस्ट है, यहाँ पॉइंट हाईएस्ट है, इसका ये पॉइंट हाईएस्ट है, इसका ये पॉइंट हाईएस्ट है। तो इस पॉइंट पे जब ब्लॉक पहुंचता है एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम इन। जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो किस मतलब फिगर में मैक्सिमम होगी, किस हाइट पर पहुंच के, मतलब किस ब्लॉक में पहुंचे तो मैक्सिमम होगी। और इसमें दे रखे जो हाइट है सभी लूप की वो क्या है, सेम है। मतलब इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट, सबकी क्या है, सेम है लूप की हाइट। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, किस लूप में होगा। तो हमारा आंसर तो वैसे ए होगा, लेकिन हम देखते हैं क्यों होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए सही है इसमें। ठीक है, ए सही ऑप्शन है, लेकिन क्यों सही है जिसको हम देखते हैं। लेट्स से कि ये एक ट्रैक है इस तरह से, ये वाला ये ट्रैक, इतना पार्ट हम बना रहे हैं ऊपर का। ठीक है, इतना पार्ट हम ऊपर का बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बड़ा जूम करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम पॉइंट पर ये ब्लॉक, लेट्स से ये ब्लॉक पहुँच चुका है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट पर ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर देखें ये ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगेगा एन, दीवार पर लगा रहा है, मतलब इस लूप पर लगा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा, अपोजिट, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जस्ट नीचे की तरफ एन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो ये एक सर्किल में मूव कर रहा है। यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, तो अगर इसको एक सर्कल मान के चले हम, इस तरह से बड़ा सा एक सर्कल है, तो इसकी एक सेंटर होगा और इसका एक रेडियस होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इसका एक कुछ ना कुछ रेडियस होगा आर, लेट से इसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखें तो एक इसके अलावा, इन दोनों फोर्स के अलावा एक फोर्स लगेगा इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि इसका मास है तो mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। और इन दोनों फोर्स के अलावा mg और n के अलावा जो इनको इक्वेट मतलब बैलेंस कर रहा है इन फोर्स को, कौन सा है, वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है क्योंकि एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों फोर्स को जो है बैलेंस करेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, यहाँ से अगर देखें तो एम वी स्क्वायर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वल होगा हमारे किसके, नॉर्मल रिएक्शन और प्लस एम जी के, क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ डायरेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ अगर देखें हम, यहाँ अगर देखें तो जो आर है 1/r, सॉरी जो रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है इस लूप की, तो रेडियस जो है 1/r, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। हम देख सकते हैं अगर इसको कांस्टेंट माने, एम की वैल्यू कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि मास की जो ब्लॉक का मास है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज तो हो नहीं रहा है। जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है। ठीक है, वी उसकी चेंज हो रही है, लेकिन वी का यहाँ पर पिक्चर नहीं है। अगर हम आर और एन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो एन है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो किसके, वो जो है आर जो है सर्कल की जो लूप का रेडियस है, उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर सबको कांस्टेंट माने तो हम इसलिए यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी छोटी रेडियस होगी लूप की, उतना ज़्यादा क्या होगा, नॉर्मल जो है नॉर्मल फोर्स होगा, उतना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा। और इसके उल्टा अगर रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी, रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर देखें चारों ऑप्शन में देखें तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में देखते हैं तो रेडियस इसमें क्या है, बड़ी हो रही है, मतलब बहुत दूर तक इसका जो डायमीटर जो फैल रहा है, अगर देखें इसको तो बहुत दूर तक है। तो इसमें जो होगा
इसमें अगर देखें तो रेडियस काफ़ी बड़ी है, इसका देखें थोड़ा सा इससे कम है, इसका देखें तो एकदम सर्कुलर है, ठीक है। लेकिन इसका देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट रेडियस है इसमें, तो सबसे शॉर्टेस्ट रेडियस है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर जब ब्लॉक आएगा तो इसमें लगेगा नॉर्मल फोर्स, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इसलिए। ओके, तो हम ये क्वेश्चन करें। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पेंडुलम है, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है 40 डिग्रीज 40 डिग्रीज, और उसका लेट सपोज उसका जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 20 डिग्रीज, तो हमें उसका टेंशन बताना है इन द स्ट्रिंग। ओके, तो लेट सपोज ये हमारा स्ट्रिंग है, जब ये 20 डिग्रीज बना रहा है तो इस पार्टिकल की कुछ इस तरफ वेलोसिटी होगी, उसे हम कह देते हैं वो होगी v, लेट सपोज। तो जब इस पे हम टेंशन लिखेंगे, इस पे लग रहा होगा नीचे mg, तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस mg cos 20 इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। ओके, तो यहाँ से आपका टेंशन आ जाता है mg cos 20 प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है लेस दैन एम जी कॉस 20, नहीं, ये एक्चुअली ग्रेटर दैन कॉस 20 है, तो ये हमारा जो ऑप्शन 2 होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर चूजिंग डाउटनेट। Hi, in this question it is given that two block M1 equal to 10 kg, M2 equal to 5 kg connected to each other by massless inextensible string. Length is given that is equal to 0.3 meter are placed along the diameter of the turntable. Clear? The coefficient of friction between the table and M1 is given that is equal to 0.5 meter, while there is no friction between M2 and the table. Clear? The table is rotating with angular velocity of this 10 rad per second about a vertical axis passing through its center O. Clear? The masses are placed along the diameter of the table on the either side of the center O, such that M1 is at a distance of 0.124 meter from O. The masses are observed to be at rest with respect to the observed on the turntable. Clear? Now G equal to this 9.8 meter per second square. So we have to calculate in the first part, we can see calculate the friction on M1. So first we have to find the friction on M1. Clear? So let us consider there is a two masses. We can consider two masses like this. Clear? So let us consider this is what M1 masses and this is what M2 masses, and here we can consider O. Clear? So M1 mass is given that is equal to 5 kg we can see, and M2 is given that is equal to 10 kg we can see. M1 is the 10 kg and M2 is the 5 kg. So we can consider here M1 that is equal to, we can consider this is what, this mass we can consider M1, and this is what 10 kg according to question we can see, and this is what 5 kg we can see. Clear? Now, and this is what O, and this is rotating in this direction we can see, and this omega is equal to, that is equal to 10 rad per second is given. Clear? This. Now this distance is given, and this distance is what we can see 0.124 is given. Clear? This distance. So this distance is what, this distance is what, 0.3 minus 0.124, and this is equal to 0.176 we can write from here. So this is the distance from M2 masses. Clear? Now in the first part of this question we have to find friction on M1. Clear? So we can see that on the M1 there is the two type of the force will act. One is the tension force in the string, and the other is the friction force in this direction. Clear? Now in this we can see that this tension will act in this direction. So in the second case, for the M2 mass, tension will provide the centripetal force. Clear? So tension will provide the centripetal force, that is equal to, we can write M2 and omega square and R2. This is the tension we can write. In this case we can write, tension and plus F. This will provide the centripetal force. Clear? So here we can write M2 and the omega square and R1 we can write. Clear? So friction we have to find. The friction equal to what? This is M2 and omega square into R1 and minus T we can write. Clear? Now from here we can find
This is what m1 and omega square into r1 minus t is what we can write m2 omega square and r2 we can write. Clear? Now omega square we can take common from here. Omega square we can take common. So from here we can write omega square we can take common. So m1 r1 minus we can write this is what m2 r2. This we can write, and this is what equal to frictional force. So all value we know we can put and we can find the value. So this is what 10 whole square we can write, and m1, so m1 is given, that is equal to 10, and r1 is given 0.124 we can write, minus m2 is what we can see 5, and r2 is what we can see from here 0.176 we can write. Clear? This. Now we have to solve this, and after solving this we can find the frictional force, and this is equal to 36 Newton. 36 Newton we can write here. So this is what 36 Newton we can see. Clear? Now coming to the second part of this question. So in the second part we can see, according to this question, we can see in the second part we have to find this. What should be the minimum angular speed of the turntable so that masses will slip from this position? Clear? So minimum speed means omega we have to find. Clear? So how we can find this? We know that frictional force is equal to this. Clear? This is the frictional force, this omega square into we can write m1 r1 minus we can write m2 r2, this, and this should be greater than equal to frictional force. Clear? For slipping we can write. Clear? Now from here we can write this is what omega square into we can write m1 r1 minus we can write m2 r2, and frictional force is equal to what we can see from here, this is mu into n, so 0.5 we can write, and n value we know, that is equal to mg. Mg means we can write 10 into g we can write here. Clear? So 10 into 10, g is what equal to 10 we can see. Clear? So from here we can write omega square greater than equal to 0.5 into 10 we can write into 10 we can write, and divided by we can write here, this is the m1 r1 minus m2 r2, this. Now omega is greater than equal to root under we can write, this is the 0.5 into 10 we can write into 10 we can write, and divided by we can see m1 r1. So m1 we know, that is equal to 10, r1 we know 0.124 minus m2 we know, that is equal to 5 into r2. R2 is what 0.176 we can see. Clear? So in this way we can find the omega, and after solving this we can see that this omega must be greater than equal to 12.91 rad per second we can write. Clear? So this must be greater than equal to 12.91 rad per second. Clear? Now coming to the third part of this question. Clear? So in third part we can see from here how should the masses be placed with the string remaining taut so that there is no friction on m1. Clear? So no friction on m1, it means friction is equal to omega square into m1 r1 minus we can write m2 r2, and it is given that no friction on m1. It means we can write this should be equal to 0, means we can write m1 r1 minus we can write m2 r2, this should be equal to 0, means m1 r1 should be equal to m2 r2. Clear? This. Now from here we can write this r1 value, and this is equal to m2, and divided by we can write m1 into r2 we can write, and it is given that m2 equal to 5. Clear? And m1 equal to 10. So from here we can write r2 and divided by r2. So we can write here, just 1 second. So from here we can write this r1 is equal to we can write r2 and divided by 2 we can write. Clear? So r2 equal to, from here we can write this r2 equal to 2 into r1 we can write. Clear? Now we know that r1 plus r2 is equal to 0.3 we can see. Clear? Now so r1 plus r2 equal to, from this relation we can write
2 into r1, and this is equal to 0.3 we can write. So 3 into r1 equal to 0.3 we can write. So r1 equal to 0.1. So r1 equal to 0.1 we can write. r1 equal to 0.1, so we can put in this equation. Clear? So in this equation we can put, then r2 is equal to what we can write? 0.2 we can write. Clear? So this r1 is equal to, we can say, this is the distance from the m1 mass, and this is a distance from the m2 mass. Clear? So this is the answer for the third part of this question. Clear? In this way we can solve this question. Hope this answered your question. Thank you.